Hello friends, welcome to Vigyangar. Hope you all are doing well. In this video, we will discuss the paper of Jamia Millia Islamia of MSc Biotechnology of the year 2023. This is part 1 of the video in which we will discuss the first 50 questions and the next 50 in the next part. So let's start. Now, what are the variables whose calculation is done according to the weight, height, and length known as? Option A, flowchart variables. Option B, discrete variables. Option C, continuous variables. And option D, measuring variables. So what happens is, in case of continuous variables, these can assume any value within a specific relevant interval of values assumed by the variable which we assume. Okay, for example, height, weight, skull circumferences can be measured by continuous variables. So correct option is option number C, continuous variables. Now the question is, an urn contains 10 black and 5 white balls. Two balls are drawn from the urn one after another without replacement. Okay, and what is the probability that both drawn balls are black? ये आपको find out करनी है. So probability का concepts भी आपको पता होने चाहिए. Questions in this paper, 2 questions are asked from it. So see here, number of black balls हमारे पास कितने given है? 10. Number of white balls हमारे पास कितने given है? 5. तो प्रोबेबिलिटी को पता है आपको, टोटल आउटकम्स आपको पता होनी चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी होगी? 10 + 5 दैट इज 15. अब हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो बोथ बॉल हैं जो हमने निकाली हैं दैट शुड बी ब्लैक. सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको? आप प्रोडक्ट करोगे किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. तो फर्स्ट बॉल डन कैसे निकालोगे आप इस चीज को? 10/15. कैसे? 10 इसकी भाई आपकी ब्लैक बॉल्स कितनी थी उसका ले लिया हमने. टोटल कितना हुआ? 15. अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है उसको दूसरी प्रोबेबिलिटी से. दैट इज कि जो हमारी अदर जो बॉल आएगी वो हमने जो एक निकाल ली उसके अलावा होगी. तो टोटल में से भी 1 माइनस होगा एंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स में से भी 1 माइनस होगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? 9/14. उन दोनों का प्रोडक्ट करके जब आप सॉल्व करते हो तो यू गेट 3/7. That is option number A is the correct one. Now our question is, covalent bond formation between two atoms takes place by. So 4 options are given. Option A, transfer of electron from one atom to other. Option B, one side sharing of electrons. Option C, electron sharing by two electronegative atoms. And D, affinity between two atoms. So for this we have a picture. Here we see what is covalent bond. Covalent bond is always formed by sharing. So transfer वाला option and affinity वाला option हम यहाँ से neglect कर सकते हैं. ठीक है. Now हमारे पास option number B and C बचता है. B says one side sharing of electrons and C says कि electron sharing by two electronegative atoms. तो अगर आप इस figure में देखते हो, there is an unpaired valence electron of atom A and atom B. Atom A we can suppose it is a non-metal and atom 2 can be non-metal or a metalloid. तो इनके पास unpaired electrons present हैं. तो इसको pair up करने के लिए या इनके बीच में covalent bond formation करने के लिए जो कि बहुत strong bond होता है, so what happen is sharing of available valence electron occurred. ठीक है, equal sharing इनके में होती है. तो हमारे पास option क्या चला जाएगा? Electron sharing by two electronegative atoms. वन साइड शेयरिंग वाला क्यों नहीं होगा? बिकॉज इक्वल शेयरिंग होती है और दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो वी हैव ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट वन. सो द क्वेश्चन इज, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पर वो बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की. सो एज वी नो, इन द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ because shape of s orbital is spherical and it is more close to nucleus of an atom we know. So the order of bond strength of the bonds will be sp1, then sp2 and then sp3. That is option number B will be the correct one. Now the question is,
हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसमें लिखा है डज नॉट, तो आपको इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि डज नॉट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज हाफ लाइफ। The half-life period of a radioactive element. It is a time required for a quantity to fall to half its value as measured at the beginning of that time period. जब तक वैल्यू हाफ नहीं हो जाती, हाफ लाइफ नाम से पता चल रहा है आपको। And it does not depend upon the temperature, concentration और the amount of element जो आप यूज कर रहे हो, initial concentration of the material. So हमारा correct option इस basis पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, initial concentration of material. बाकी देखिए constant, type of radioisotopes क्या यूज कर रहे हो और क्या energy emission हो रही है, उन सब पे depend करती है half life of that radioactive material. Depend किस पे नहीं करती, if other options आपको given हो, if temperature given हो, then also वो करेक्ट होगा, बट एज टेम्परेचर इज नॉट गिवन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। नाउ द क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सी सेकेंड ऑर्डर, डी जीरो ऑर्डर। सो फॉर दिस वी हैव अ ग्राफ. This question is based on Michael-Menten kinetics. So here see, x-axis we have substrate concentration and on y-axis we have reaction velocity, that is v. So जब हमारे पास यहाँ पर substrate concentration low है, तो आप देख रहे हो कि हमारी जो काइनेटिक्स है वो ग्राफ जो है वो लीनियर की तरफ जा रहा है एंड सब्सिक्वेंटली वो जो है क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा एट हाई कंसंट्रेशन। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देयर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड द रिएक्शन वेलोसिटी। Okay, whereas if they asked about high order, then हमारा आंसर zero order reaction होता, but as they are asking low substrate concentration, so our option is option number A, first order reaction. Now see, maximum possible isomers for glucose are, so here we have the structure of glucose. तो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें कायरल सेंटर्स कितने हैं। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो ग्लूकोज में 1 2 3 4 कायरल सेंटर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। कायरल सेंटर्स मतलब कि अगर आप इस कार्बन के अराउंड देखते हो तो जो चारों जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि ये कायरल कार्बन है। तो इस केस में हमारे पास 4 होते हैं इसके ग्लूकोज के। सो वी यूज द फॉर्मूला दैट इज 2 टू द पावर n, ठीक है, n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो यहाँ पर अगर हम ग्लूकोज के केस में अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव 2 टू द पावर n, n यहाँ पर कितने हैं 4, तो 2 टू द पावर 4 अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर इसके कितने हो जाएंगे कायरल सेंटर्स, विल बी 16. Okay, so correct option is option number C. Now the next question is, which of the following is epimer of glucose? Option A sucrose, option B mannose, option C fructose, and D is trehalose. So see, this is the structure of glucose. Okay, here epimer होता है that differ from the structure, बाकी सब कुछ सेम होगा, just one carbon पर वो differ करेगा। In both the cases we see it is differing only on one carbon, बाकी आप structure match करते हो, पूरा का पूरा structure same है, ठीक है। So that is the epimer. जहाँ पे अगर हम डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज के 2 एपिमर होते हैं, मैनोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज होता है एट C4 एंड मैनोज होता है एट C2। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मैनोज। और वो कौन से पोजीशन पर है, दैट इज एट C2, वो अब भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ द क्वेश्चन इज, calculate the pH of a solution of 0.10 m HCl. So pH का we know the formula is minus log concentration of H positive, and pH we know what is pH, power of hydrogen ion. Okay, so if we put the value that is given, that is 0.10 in our formula, minus log 0.10,
So by solving this, we get 1. So our correct option is option number A, 1. Our question is, the reference electrode is made by using option A ZnCl2, option B CuSO4, option C HgCl2 और D Hg2Cl2. So most commonly जो हम reference electrode use करते हैं, that is calomel electrode. ठीक है, its reduction potential depend upon the concentration of KCl solution that is used, and this electrode is mainly made by using HgCl2. So the correct option is option number C, HgCl2. Esters and anhydrides are derivative of. So for this, option A aldehyde is given, option B ketones, option C ethers, and D carboxylic acid. So for this we have a table here. See, carboxylic acid derivatives are mentioned here. That is acid halide, anhydrides, ester, amide, thioester, and acyl phosphate. So the option correct will be option number D. In this chart, ethers, ketone, or aldehyde is not mentioned. So option number D is the correct one. Other than esters or anhydride, if it is asked, acid aldehyde they have mentioned, or they have mentioned acyl phosphate, thioester, or amide, then also the correct answer will be carboxylic acid only. So here the correct is option number D. Now the question is, the drug azithromycin is used for option A cancer treatment, option B AIDS treatment, C bronchitis treatment, या D ulcer treatment. So azithromycin is also known as zidovudine, and it is used to prevent and treat HIV or AIDS. What is the mechanism of action for this? It is a thymidine analog and it works by selectively inhibiting HIV reverse transcriptase, जो आप enzyme का function क्या होता है, that the virus uses to make a DNA copies of RNA, उसको ये क्या करता है, inhibit कर देता है. So it is used in treatment of AIDS. Option number B. What is the mass of an atom of oxygen? 4 options आपको given है. This is also a numerical type question. So we know 1 mole of oxygen atom is 16 gram. Okay. So mass of 1 mole of oxygen atom will be, mass क्या हो जाएगा, 16 gram per mole. Okay. Number of proteins हमें पता है एक मोल में कितने होते हैं, the Avogadro number, that is 6.023 into 10 raised to power minus 23 mole inverse. तो अगर आपको मास निकालना है तो वेट अपॉन में दी Na, that is Avogadro number, आप कैलकुलेट करोगे 16 अपॉन 6.023 10 raised to power minus 23, इसको आप सॉल्व करते हो तो you will get 2.657 into 10 raised to power 23 gram per atom will be present. So option number हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर A, 2.656 into 10 raised to power minus 23. Now we have, in animals, the carbohydrate energy is stored in the form of option A amylose, option B amylopectin, C is glycogen, and D is glucagon. So see one by one. Amylose and amylopectin, we know they are the component of starch. Okay, तो वो नहीं हमारे ऑप्शंस हो सकते. देन ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, विच एनिमल्स यूज टू स्टोर द एनर्जी. ओके, एंड ग्लूकागॉन तो आपको पता है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन जो कि हमारा अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट करती हैं, तो वो इज not related to this category. So option number C is the correct one. Now the question is, among the following, which amino acid do not show any absorbance from 250 to 290 when absorption spectra is taken in UV visible spectrophotometer? Option A tyrosine, option B tryptophan, option C glycine, and option D phenylalanine. So if we see the peak of the three
amino acid, that is tryptophan, tyrosine and phenylalanine, we get the absorbance from 250 to 290 range, whereas that the glycine show the absorbance range on 216 nanometer. सो हमें बताना था कि जो एब्जॉर्बेंस नहीं शो करता, सो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लाइसिन. Now, the question is the most probable amino acid occurring at bent and turns of polypeptide is option A tryptophan, option B proline, and option C histidine, and option D is isoleucine. So out of the four, proline, which is in case of helix is also known as helix breaker because of its unusual R group. It creates a bend in the chain and not compatible with the helix formation. Similarly, it is found in bends, that is the unstructured region between secondary structures. So option number B is the correct one, proline. Now chirality of DNA is due to. So first of all, you should know what is chirality. It is used to describe a molecule whose enantiomers are non-superimposable on their mirror images. And in case of DNA, it is due to presence of the sugar. And in DNA, we have the deoxyribose sugar. Other options which are given, that is base stacking and hydrogen bonds, provide stability to DNA. They have no role in chirality of DNA. So for chirality, deoxyribose is present, that is option D is correct. Now the question is the distance between two base pairs in Watson-Crick base B DNA is A 34 nanometer, B 3.4 nanometer, option C 0.34 nanometer, or D, that is 0.034 nanometer. So for this you have to know the characters of BDNA. Not only the BDNA, you should know for ADNA, B and Z, all three. So for this I have added a table in this. See, they are asking what distance between two base pair, that is rise per base pair along axis they are asking about. And in case of B DNA we have 3.4 angstrom, but उन्होंने नैनोमीटर में पूछा है, तो that is 0.334 नैनोमीटर. तो करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.34 नैनोमीटर. अदर आपको बाकी की सारी प्रॉपर्टीज लाइक हेलिक्स राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, आपको पता होना चाहिए. शुगर पकरिंग क्या है इनमें, C2 एंडो, C3 एंडो, राइस पर टर्न क्या है, ठीक है, मीन बेस पेयर पर टर्न क्या है, तो ये कैरेक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए ऑफ ऑल द थ्री. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 0.34 nanometers. The question is, among the following, which vitamin form cannot be obtained by plant source? Option A riboflavin, option B thiamine, option C retinol, and option D is cobalamin. So out of the four, that is option D cobalamin, जिसको हम vitamin B12 भी बोलते हैं, it is found in animal source food such as fish, meat, dairy products and eggs. Okay, and it is a water soluble nutrient that is involved in developing red blood cells and maintaining nerve and normal brain function. So option D is cobalamin, जिसको हम vitamin B12 भी बोलते हैं. Option D is the correct. Now this is the probability question. Here they are saying let A and B be the two given events. A और B आपको दो events दे रखे हैं, जिसमें probability of A 0.6 है, probability of B 0.2 आपको given है, and probability of A by B आपको given है 0.5. Then you have to calculate probability of A dash by B dash. 4 numerical options आपको given है. So for this, see, given है हमारे पास क्या क्या है, probability of A given है, that is 0.6, probability of B given है 0.2 और A by B की given है 0.5. तो probability of A by B का बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है, that is probability of A intersection B divided by probability of B. तो यहाँ से अगर मुझे probability of A intersection B सॉल्व करना है तो मैं इसको इधर लेके जा सकती हूँ. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास P A intersection
B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, सो दैट विल बी 0.1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, भी आपको निकालना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के केस में। तो आप सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज गिवन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको सॉल्व हो जाएगा। तो 0.6 प्लस 0.2 माइनस 0.1 सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.7। अब आपको सिमिलरली प्रोबेबिलिटी निकालनी है A डैश बाई B डैश की, तो आप क्या रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश intersection B dash divided by probability of B dash. So that will be equal to probability of A union B dash divided by 1 minus probability of B, that is 1 minus 0.7, 1 minus 0.2 जो कि आ जाएगा 0.3 by 0.8, पूरा सॉल्व हो जाएगा 3.8। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको फॉर्मूलेज इसके लर्न करने पड़ेंगे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। Now, which one of the following value is used as a summary measure for a sample, such as sample mean? So, option A is population parameter, option B sample parameter, option C sample statistic, and option D population mean. So the correct one is option C, sample statistic. How? Because the sample statistic measures the sample means. For example, if we have to calculate how much a person earns in India, so the population is every Indian, but due to time and amount spent, you cannot ask each and every person. So we consider 100 persons in random and take our data from these. So a sample statistic is a piece of information that is obtained from a fraction of population. Correct option is option number C. Now the question is, what is the end product of glycolysis? Glycolysis, we know it starts from glucose and ends to pyruvate, which is a 10-step reaction, in which 7 steps are reversible and 3 steps are irreversible. So options are given, that is glucose. Glucose तो हो नहीं सकता because we know कि glucose is the start of glycolysis. ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है एट लास्ट। ऑप्शन बी पायरुवेट जो कि करेक्ट है। ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन डी ग्लाइकोजन, वो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पायरुवेट। अदर देन पायरुवेट यू शुड नो कि ग्लाइकोलिसिस से और आपके इथेनॉल बन सकता है। ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 इन डिफरेंट कंडीशन। एंड ऑल्सो आपसे क्या बन सकता है इन ग्लाइकोलिसिस, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी हो सकती है। बट इफ जनरली दे आर आस्किंग तो एंड प्रोडक्ट विल बी पायरुवेट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Now the question is, among the following, which compound link glycolysis with Krebs cycle? Okay, so option A acetyl CoA, that is coenzyme A, pyruvic acid, option B, option C is glucose, and option D is oxaloacetic acid. So see this diagram. Here we know by glycolysis pyruvate is formed. 2 molecules of pyruvate is formed per glucose. Okay, this pyruvate is first converted into acetyl coenzyme A by the help of PDC complex, which you will know if you study it in a detail. So acetyl CoA, that is acetyl coenzyme A. Then what happens is it enters the Krebs cycle. So basically the compound which link the both glycolysis and Krebs cycle, that is acetyl CoA, acetyl coenzyme A, that is option number 1. Okay, is the correct one. Now in mitochondria, the enzymes of electron transport chain, that is ETC, are located at A outer membrane, B extra chromosomal DNA, C inner membrane, and D matrix. So ETC, that is electron transport chain, it is one of the most important metabolic processes of living cell which aids in ATP productivity in mitochondria.
where H positive ion gradient is used, which is very important and being created by the ETC. The enzymes and proteins present in the inner mitochondrial membrane of the mitochondria where this ETC takes place. That is correct answer हमारा हो जाएगा option number C, inner membrane. Now next we have the fluid mosaic model of plasma membrane was given by. Options are A. Watson and Crick, B. Singer and Nicholson, C. Robert Frost and Hook. So fluid mosaic model was given by Singer and Nicholson, in which they explain the structure of plasma membrane of animal cells as a mosaic of components such as glycolipids, carbohydrates, glycoproteins, the phospholipid bilayer, okay, and lipids are arranged as a hydrophobic non-polar tails. They have non-polar tails. The peripheral membrane proteins present, the cholesterol, integral membrane proteins. So it was given by Singer and Nicholson. You can also eliminate the options because Watson and Crick, you know, उन्होंने DNA से related था उनका work, ठीक है. उसके अलावा हुक जो थे रॉबर्ट हुक वो सेल की डिस्कवरी में थे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. Cholesterol occurs in membranes of A. Only prokaryotes, B. All prokaryotes, C. All higher eukaryotes, and D. Only plants. So cholesterol occurs in all higher eukaryotes. It is the principal sterol of all higher animals, distributed in their body tissues, especially the brain, spinal cord, and in animal fats and oils. So correct option is option number C, all higher eukaryotes. Now, among the following, which ions is actively transported? So here options are given. Option A, sodium. Option B, potassium. Option C is calcium. And option D is chloride ion. So if we see, the sodium and potassium both are actively transported throughout the cell. But what happen is, if we have to choose one, so any will be the correct because the K, that is the potassium, is in response to maintain the resting potential. So our correct option is sodium, that is option number A. Now this is again the numerical. The molar concentration of 20 gram of NaOH present in 1 liter of solution. So molarity के concepts आपको मतलब numerical the formula आपको बिल्कुल clear होनी चाहिए, ठीक है. So here see molarity, molar concentration you have to calculate. It means you have to calculate the molarity. Okay. Molarity का formula क्या होता है? Number of moles of that substance divided by volume of solution in liter. Okay. So given mass जो हमारे पास क्वेश्चन में given है that is 20 ग्राम and volume हमारे पास 1 लीटर है. तो पहले आप number of moles निकाल लोगे, that will be given mass upon molar mass, that is 20 upon 39.99. molar mass आप calculate कर सकते हो by simple formula we know. So our moles will be 0.50 moles. Putting in molarity formula, number of moles is 0.50 and volume of solution उन्होंने पहले ही लीटर में given है. तो the answer will be 0.5 moles per liter. That is option number C is the correct one. उसके अलावा आपको याद क्या रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, बी इट वो मोलारिटी को हो या फिर किसी और टॉपिक पे हो, यूनिट कन्वर्जन्स का आपको याद रखना है. यहाँ पर सारी यूनिट्स ऑलरेडी ग्राम लीटर्स वगैरह में गिवन थी, हो सकता है वो मिलीलीटर्स में आपको दे दे, तो यू हैव टू चेंज इट. सो यूनिट कन्वर्जन्स का आपको याद रखना है. Now, which of the following easily dissolve in polar solvent? So for dissolution in polar solvent, we need a polar solution, like dissolves like. Out of the 4 options given, that is A is benzene, B is methane, C is argon, and D is sodium chloride. Out of the 4, A, B, C, these 3 are non-polar solvent, so they cannot dissolve in polar solvent. The correct will be option D, sodium chloride can easily be dissolved in polar solvent. So our correct option is option number D, sodium chloride. Now the question is,
10 ml of 2 molar NaOH solution, okay, is added to 200 ml of 0.5 m NaOH solution. So you have to calculate what is the final concentration. Options are given to you in molar concentration. So for this, we have to calculate final concentration. The formula which we will use is M for final will be M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2. So for solution 1 M1 उन्होंने कितना given है 2 molar, V1 है 10 ml and for M2 जो कि NaOH का solution ही है same जो कि given है M2 is 0.5 and V2 is 200 ml. So if we put the values in our formula, we get, after solving, we get 0.57 m. So the correct will be option number A, 0.57 m. So कहीं पर भी final concentrations अगर आपको निकालनी हो and you have two solutions, तो you will use the formula this one. Okay. So option A is correct. So here the number of protons, neutrons and electrons in element X जिसका आपको 89 atomic number and mass number 231 given है is, so आपको इसके लिए see, here I have solved this question. Atomic number we have Z 89 and mass number that is given 231. So सबसे पहले if we calculate number of protons, so we know number of protons is equal to atomic number and atomic number is 89. So number of proton is also equal to 89. Number of electrons को जब हम देखते हैं that is equal to atomic number, same, so that is also 89. But number of neutrons is equal to the difference of mass number and atomic number. तो A minus Z जब आप करते हो तो 231 minus 89 will be 142. The number of, as per the series, number of proton, neutron and electron will be 89, 142 the neutrons and 89 electrons. So correct option is option number B, 89, 142 and 89. The drug used as antidepressant. Option A luminol, option B tofranil, option C mescaline and option D sulfadiazine. So out of the four options, option number B, that is tofranil, is the correct one. It is a tricyclic antidepressant which have the brand name of imipramine. It works by restoring balance to chemicals in the brains and that helps to regulate our mood. And it treats depression in adults and the children who are 12 years or older. So our correct option is tofranil. Option number B. Now cellulose digesting enzymes are present in. So सबसे पहले we should know what is cellulose. Cellulose is a complex polysaccharides, that is the polymer of glucose, and the linkage present is beta 1,4 glycosidic linkage. तो cellulose को digest करने के लिए we have some bacteria, also we have some enzymes, that is cellulases, that are present only in ruminant animals. Ruminant animals such as your cow, goat and sheep, which graze on the grass, and they have symbiotic bacteria in their abdomen that can digest the cellulose. However, humans do not have that bacteria, or the mammals do not have the bacteria or the enzyme for digestion of cellulose. Similarly, all herbivores cannot have the cellulase. So the correct option is option number C, in cattle, that is a ruminant animal. अगर cattle की जगह option आपको goat या sheep से given होते, then also option number C ही हमारा correct होता, and if ruminant animals लिखा होता तो भी वो correct one होता. So यहाँ पर option number C is the correct one. Here the question is night blindness is caused due to deficiency of. So आपको सारे vitamins और उनकी deficiency के symptoms और किस vitamin से वो cause हो रही हैं और क्या disease है वो आपको पता होनी चाहिए. तो इसके लिए I have added a table here for vitamins, their symptoms and the deficiency disease.
सो विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज लॉस ऑफ विजन, जहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन जो हमारा पिगमेंट होता है विजन के लिए, दैट इज अफेक्टेड. ठीक है, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट्स आवर cornea and damage the retina. So here the option correct is option number D, vitamin A. बाकी vitamins को भी आप स्टडी करके चले जाना, बिकॉज अदर विटामिन से भी नेक्स्ट टाइम में भी किसी और विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल बेरी बेरी के लिए भी है विटामिन बी, बी से B1 एंड बी से बेरी बेरी आर से आप इसको याद कर सकते हो. विटामिन सी के लिए भी है स्कर्वी, डी के लिए वी हैव rickets and calcium, bone and tooth decay, iodine, goiter, which is very famous matlab, and iron we have anemia. So for here they have asked about night blindness, so option number D is correct, vitamin A. Now, which one of the following is a hormone as well as neurotransmitter? So, option A is epinephrine, option B acetylcholine, option C thyroxine, and option D glucagon. So, out of the four, option A epinephrine is the correct one. Other, that is acetylcholine, is only the neurotransmitter. Thyroxine and glucagon are the hormones which have their specific functions. So what about epinephrine? Epinephrine, also known as adrenaline, and it play important role in your body for flight and fight response. This is the exact term which we use for epinephrine. And also it is used as a medication to treat many life-threatening conditions. So option number A is the correct one. Which one of the following is responsible for ejection of milk from mammary gland in a mammal? Option A oxytocin. No, because oxytocin is used in parturition. Option B prolactin. It is the correct one because it is used in injection of milk from mammary gland. However, serotonin is used in controlling our mood and melatonin is used for our sleep-wake cycle mainly. So option B is the correct one. Question is the dihybrid ratio 9:7 represent A. Dominance, B. Independent assortment, C. Epistasis and D. Codominance. So जो भी आपके ये हैं इनके आपको रेशियोज पता होने चाहिए. So dominance का रेशियो अगर हम देखते हैं तो dominance में we have our ratio 3:1 का रेशियो में मिलता है. ठीक है. Independent assortment में we get the ratio of 9:3:3:1. एपिस्टेसिस में हमें 9:7 का रेशियो देखने को मिलता है. ठीक है. एंड कोडोमिनेंस में हमें कौन सा रेशियो देखने को मिलता है? इट इज 1:2:1. सो द करेक्ट वन इज एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप सब उन सब के रेशियोज आपको पता होने चाहिए. यहाँ पर करेक्ट इज एपिस्टेसिस 9:7. In genetic map, distance between two genes is measured in the unit of cm, that is centimorgan, AO, C is BP, and D is nm. So the correct is centimorgan, cm, जिसमें हमेशा हम C जो है small लिखेंगे, M capital में लिखा जाता है. So what is centimorgan is, it is one person crossing over between two linked gene if we have. So it is known as one map unit or 1 centimorgan. If there is 100% crossing over, it is termed as Morgan M, and 10% crossing or over, then it is given as decimorgan DM. Okay, so here the correct one is, the basic unit which we use is centimorgan, CM. Extra chromosomal inheritance can be detected by A. Back cross, B. Test cross, C. Reciprocal cross, and D is dihybrid cross. So what is extra chromosomal inheritance? It is the inheritance when your genetic material, it is found in cytoplasm rather than the chromosomes, and it follow non-Mendelian pattern of inheritance. Okay, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स, है ना. Mirabilis jalapa का example होता है four-of-club plant. So here we study or we can detect it by the help of reciprocal cross, जिसमें हम parents के genotype reciprocate कर देते हैं, change कर देते हैं. ठीक है. So
The answer is option number C. Question is, letters of SAP taken all at a time can be written in option A 2 ways, option B 4 ways, option C 6 ways, and option D 10 ways. So we have a solution here. Number of letters in SAP is 3, S, A and P. So we use formula that is for combination. Combination का factorial हम कर देते हैं, कितने number of combinations possible है, तो यहाँ पे कितने possible है 3, तो 3 factorial अगर आप solve करोगे तो क्या होगा 3 into 2 into 1, तो 3 2 जा 6, इसका मतलब हमारी कितने ways में possible है 6 ways में, तो correct answer will be option number C, 6 ways. Now the question is, which bond or interaction is not seen between enzyme and a substrate? Option A van der Waals interaction, option B hydrogen bond, option C peptide bond and option D ionic bond. So अब अगर हम बात करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरैक्शन के बीच में, तो उनके बीच में वीक इंटरैक्शंस होती है. वंडर वॉल इंटरैक्शन हमारी वीक इंटरैक्शन है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अमीन या अल्कोहल सबस्ट्रेट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक्स प्लेस बिटवीन द enzyme and a substrate. Then ionic bond is also present in enzyme and substrate interaction. When a substrate have an ammonium group, ठीक है, that is enclosed to a carboxylic group in glutamate और aspartate side chain में जब आप देखते हो तो ionic bond form होगा. The bond जो हमारा form नहीं होगा that is peptide bond, because peptide bond आपको पता है it links to amino acids के बीच में होता है. Enzyme and substrate में there is no peptide bond. So our correct option will be option number C, peptide bond. Now, during an enzyme assay, if the initial velocity V0 is half of Vmax, the substrate concentration will be equal to option A 0.5 of km, option B km, option C 2 km or option D 0.2 km. So this is the concept of Michaelis-Menten equation. If we see here graph, x-axis shows the substrate concentration and y-axis shows the velocity. जहाँ पे आप देखते हो Michaelis-Menten equation ये होती है V0 is equal to Vmax into S upon Km. Okay. So if we see the graph, this is red line graph. This is hyperbolic graph or curve we can say for this Michaelis-Menten equation. Here we can see half of Vmax is at this point. जहां पे half of Vmax है, here this is the velocity is half, okay, and यहाँ पर उन्होंने पूछा substrate concentration क्या होगी, तो we extrapolate the graph, the substrate concentration here will be Km. Okay, so correct option will be option number 2, Km. Now the question is, the position of collagen triple helix in Ramachandran plot is A top left, B top right, C bottom right and D bottom left. So see, here this is the diagram showing different types of structure and their location in Ramachandran plot. If we see collagen triple helix, so it is in this quadrant. It is top right. So our correct option is option number B, top right is the correct one. Now the question is, in which forms of DNA the number of base pair per helical turn is 10.5? Okay, so as we know, we have different forms of DNA, A form, B form, Z form, mainly 3 types we know. So here we have a table in which we shows different DNA types A, B and Z DNA and their properties. तो आपको तीनों की properties learn होनी चाहिए, because they can ask in match the following or they can ask in this type of question. So if we see 10.5 base pair turn is present in your B DNA. Okay, the B DNA. So the correct option is option number B. ओके, अदर प्रॉपर्टीज भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे हेलिक्स कौन सा है. सो हेलिक्स में हमारे पास यू कैन लर्न ऑफ वन, दैट इज जेड डीएनए जो है वो आपका लेफ्ट हैंडेड है, बाकी दोनों आपके राइट हैंडेड है. उसके अलावा आपको मेजर माइनर ग्रुप की शेप्स, हेलिकल लेंथ एंड हेलिकल डायमीटर भी पता होना चाहिए. बी डीएनए का ज्यादातर आपको याद करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. ओके,
So here they have asked about base per helical turn. 10.5 is for BDNA. So correct option is option number B. Now we have flagellant protein is associated with. Okay, so flagellant protein, we know it helps in locomotion. Also, it has the capability to give innate immune response. Okay, it is present in flagellated bacteria. More specific अगर हम बात करें तो gram negative bacteria में ये present होता है. So option number A is the correct one. If we talk more, तो flagellin have different subunits, that is D0, D1, D2 and D3 subunits इसके पास होती हैं. D0 is situated in the central core and D1, D2, D3 जो है वो outside present होती हैं. And main function of flagellin, you know, is it helps in locomotion and giving the innate immune response. It also have the TLR5 recognition region is also present. So option number A is the correct one. Thank you friends for watching our video. Please like our video, share our channel and also subscribe our channel for more updates.